हेलो एवरीवन। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने थर्ड मेजर्स जो अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान 20 लाख करोड़ पैकेज के अंदर जो तीसरे सेट ऑफ मेजर्स थे वो बताए। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ अबाउट दोज 11 मेजर्स जो कि आज अनाउंस हुए। And let me, before I begin, let me tell you that all the measures were focused on agriculture, and I will take you through, those measures. So most of the measures were to build infrastructure and capacity in agriculture, और बहुत बड़े बड़े आज अनाउंसमेंट्स हुए। कुछ थोड़े से पैटर्न शेकिंग अनाउंसमेंट्स भी थे कि जैसे अब किसान जो पहले सिर्फ एपीएमसी कॉन्ट्रैक्टर्स को बेचा करते थे, अभी उनको सुविधा है कि वो किसी को भी बेच सकते हैं अपना प्रोड्यूस। सो काफ़ी मेजर्स आज अनाउंस हुए फॉर बेटरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बेटरमेंट ऑफ फार्मर्स। और किसानों के लिए काफ़ी अच्छा, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स हुए, एंड आई विल टेक यू थ्रू देम। एंड तीन मेजर्स अनाउंस हुए फॉर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्रीकल्चर। आज सारे के सारे मेजर्स एज आई सेड वर फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए थे और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए थे। तो लेट मी बिगिन। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के अंडर जो मेजर्स अनाउंस हुए, वन वाज 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विच इज़ टू डेवलप सप्लाई चेन इन एग्रीकल्चर। सो ये यूज़ होगा टू फंड एग्रीकल्चर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एट फार्म गेट एंड एग्रीगेशन पॉइंट्स लाइक कोल्ड चेन, सप्लाई चेन ऑफ एग्रीकल्चर को फर्दर डेवलप करने के लिए ये 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की। एंड दैट वाज द फर्स्ट मेजर अनाउंस्ड। Then on the micro food enterprise side, these are small producers of food and processors, and 10,000 crores was earmarked for formalization and branding of MFEs. एंड इसके अंदर काफ़ी क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी बात की कि जैसे यूपी में मैंगो क्लस्टर है एंड JNK हैज़ अ केसर कल्टीवेशन कल्चर. So those clusters will be targeted, and this 10,000 crores will go into improving the health safety standards and also integrating these producers with retail markets and improving their incomes eventually. तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा छोटे फूड मैन्युफैक्चरर्स को, एंड ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रहेगी. देन वी हैव अदर मेजर्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. इसके अंदर पहले ही ये योजना पहले ही अनाउंस हो गई थी बजट में. 20,000 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड, 11,000 करोड़ फॉर इनलैंड फिशरीज, मरीन एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड द रेस्ट फॉर हार्बर्स, कोल्ड चेन्स एंड मार्केट्स. तो अब इससे जो एक्सपेक्टेशन है कि 70 लाख टन जो फिश का प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, 55 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट बढ़ेगा इन नेक्स्ट 5 years. सो बिग मेजर फॉर द फिशरीज सेक्टर. 20,000 crores earmarked, 70 lakh ton fish produced to be additional, 55 lakh more people to get employed, and 1 lakh crore increase in exports over the next 5 years. Then the finance minister discussed about National Animal Disease Control Program, which is already going on, and she gave a status of that. So 1.5 crore animals have been vaccinated against foot and mouth disease, जिसको कि दे वांट टू टारगेट कि 53 करोड़ जो टोटल एनिमल्स हैं, काउज एंड बफेलोज हैं, उसको टारगेट करके दे विल वैक्सीनेट ऑल ऑफ देम बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम. Fifth measure was in animal husbandry. So, the finance minister spoke about creating a 15,000 crore animal husbandry infrastructure fund. So, this will be a big push to the dairy sector. So, a lot of projects in dairy processing, value addition, and cattle feed exports or cattle feed processing infrastructure will be created through this 15,000 crores. And this will be earmarked for dairy industry as such. So this was another, not the amounts not big, but from the perspective of dairy industry, this was a measure announced for the dairy sector. Then these are small measures, but I'll take you through them. One is the promotion of herbal cultivation. 4,000 crores under National Medicinal Plants Board has been earmarked to develop 10 lakh hectares
10 लाख हेक्टेयर का कल्टीवेशन ऑफ हर्बल प्लांट्स होगा, जिसमें से कि 800 हेक्टेयर्स विल बी अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा. सो ये भी एक चीज़ डिक्लेयर की गई. सेवेंथ इज ऑन बी कीपिंग. सो बी कीपिंग के लिए 500 crores, which is a small amount, looks like a small amount, but it's big from the point of view of the beekeeping industry. And 2 lakh beekeepers will be, encouraged through this 500 crores to, produce products like wax and all, so that we reduced our dependency on imports of wax of different kinds, edible, non-edible, from outside. So this is another initiative. And eighth is, from top to total. So this top here stands for, tomatoes, onions and potatoes. And these crops were being sold at distressed prices during COVID-19, because the produce was not coming to the urban markets. There was a lot of, logistical issues. The trucks, they were not getting the trucks. Farmers were not able to book trucks. And 500 crores will be added to this existing scheme called Top to Total. And initially this will be done for only 6 months, and this will give farmers subsidy for transportation and storage of top, which is tomatoes, onions and potatoes. And this will help them, store at a reduced cost and transport at a reduced cost. Then I'm going to the big reforms from an administrative point of view, never heard of before, governance initiatives. The amendment to Essential Commodities Act. Now Essential Commodities Act is an act in which, there were a few commodities defined in 1955 which were considered essential. And, the export was subject to limits. How much a food processor could hold those commodities was subject to limits, and how much exporters can hold those commodities was subject to limits. Now the government of India is announcing that Essential Commodities Act को deregulate करने जा रहे हैं, and they will, cereals, edible oils, oil seeds, pulses, onions and tomatoes will be deregulated with no stock limits. कोई stock limit नहीं रहेगा for food processors, for exporters, of course subject to their capacity and export demand, but these limits will only be enforced if there is an emergency in the country. So I think these measures will lead to a price inflation also, going forward, because a lot of industries will be, tempted to stock more. And we'll see the impact in the future, but this is going to happen. And that movement from a scarce commodity to a, self-sufficient kind of a nation, where there is no limit on stocking, is coming about, through this. So that's why I say this is groundbreaking and this is happening for the first time. Even measure number 2 is something which I have never heard of. Farmers always sell to licensed APMCs, right? And these are called APMC mandis, and farmers always sell to these guys, and they have a limited number of licensed guys they can sell to. बट अब क्या है कि फार्मर्स कैन सेल टू एनी बडी एंड एवरीबडी, और इंटर स्टेट ट्रेड भी कर सकता है फार्मर, एंड ई ट्रेडिंग भी कर सकता है. सो फार्मर्स के लिए, कोई भी किसान अगर इस वीडियो को सुन रहा है, तो दिस इज़ अ बिग स्टेप कि अब आप बेच सकते हैं नॉन APMC लाइसेंस्ड को. अभी ये लॉ नहीं बना है, बट लॉ बनने के बाद आप ये कर सकते हैं, और इंटर स्टेट भी बेच सकते हैं. So these two measures I think are the biggest ones. Even, they outshadow the 1 lakh crore agri infra fund, which is also important, but I think these are a big measures announced today. And the last one was, agriculture produce price and quality assurance. Now this is something, when a farmer is going to cultivate something and he doesn't know about what the crop is going to yield at the end of the day. So and he's unsure to the very end. He is not able to make a decision because he doesn't know which crop to sow and what will be the yield, what will be the price, तो क्या उगाना चाहिए. So अभी क्या है कि लीगल फ्रेमवर्क एक सेटअप करना जा रही है गवर्नमेंट, जिसके साथ फार्मर्स बिफोर सोइंग और उगाने से पहले दे कैन टॉक टू प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, लार्ज रिटेलर्स एंड एक्सपोर्टर्स, ताकि उनका रिस्क थोड़ा मिटिगेट हो जाए और शायद वो एक अश्योर्ड, वैल्यू पे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकें विद दीज एक्सपोर्टर्स, विद दीज रिटेलर्स, एंड क्वालिटी भी स्टैंडर्डाइज कर सके. सो दिस वॉज अनदर मेजर, अनाउंस्ड टुडे, and it was a totally agriculture focused kind of an announcement today. The third measures, in which 11 measures were announced, all targeted at farmers and agriculture. I hope you could get a good summary in the last few minutes that we spoke to each other on this forum. And
I'll be happy if you can like and subscribe to this channel so that whatever I make comes to you instantly. And I'm hoping that you are getting a lot of information from these videos. Thanks a lot for watching, and have a great weekend ahead. Thank you.